वेलकम बैक। एक और दिन एक और मैच। आई हैव नथिंग। मैं कुछ बोलना भी नहीं चाह रही हूँ। फोटो बॉम्बिंग करते कभी बीच में कभी ये- अपने मसल्स देख रहे होंगे। ये पता है when long time back in 2010 I went to Korea, वहाँ पे हर कोई ऐसे खड़ा हो जाता था फोटोग्राफ के टाइम पे। This is that only. This is the internet. That's what. Why do you think people do that? See, I've seen two gestures. This is victory sign. This is victory or peace or like, hey, what's up? I've seen two gestures. Okay, this is एक तो ये है और for some reason this. I don't know what this means. इसका मतलब क्या? I've seen. ये तो ऐसे कि मैं कितनी सुंदर हूँ। That's what it means. You have to speak. You know, Anjali, the last 2 months have been a period of education for me. In the Gen Z language, from the most Gen Z person I've met, at least in the last 1 decade. Gen Z कौन सा वाला है? Gen Z नया वाला है. अच्छा ठीक है. So you're the. I had that. You have a Gen Z appeal. है ना? We are the Gen X. We are the Gen X. I mean, ये शो पे बुलाते ही हम आते हैं, जब नहीं बुलाते नहीं आते हैं. लेकिन हमें आके ये सब सीखने को तो मिलता है. गाने गा रही है मैडम, मैं कितनी सुंदर हूँ. करना चाहिए. No, see, today is a special day. हाँ, आज एक खास दिन है. उसकी वजह ये है कि वो नहीं कि PBKS का मैच है या दिल्ली का मैच है इसलिए मैं खुश हो रही हूँ. आज हम इसलिए खुश हैं क्योंकि आज हम बीच में बैठने का औहदा हमने दिया है राजश्री को. मुझे ये मेमो मिला ही नहीं है, the white memo. नहीं तो वो वही आइडिया था कि that we will bring you and we'll make you sit in the center. Exactly. मैंने मैसेज किया अंजलि को सुबह कि we'll be wearing white and राजश्री को बताना नहीं है ये क्योंकि राजश्री white पहनती नहीं है कभी. I've never seen Rashi wear white. मुझसे एक प्रॉब्लम होता है, पता है white का क्या होता है? I mean, this is one time I got a brand new white shirt. I wore it and I spilled coffee on it. The only time, and my wife said you don't deserve to wear white. So stop. मैंने कहा था ना, मैंने यही कहा था कि प्रॉब्लम होगी मेंटेनेंस की. खैर उसकी टिप्स मैंने दे दी थी और आप लोगों को भी बाद में दूंगी, लेकिन पहले इसमें समोसे का तेल नहीं है. अभी है हल्का सा ऐसा छोटा सा स्पॉट है वैसे. छोड़ो समोसे छोड़ो, मैच पे आओ. हे भगवान, I try so hard to be serious journalist in this group, but then of course I'm the only one trying hard here. कल के मैच की बात करें. अच्छा, कल हमने क्या बात की थी? जेसन बेरेंडॉर्फ. Yeah. And he had that immediate impact. And Krunal Pandya, I had him as my captain. I mean, obviously, I made some changes to the team after the toss, but what an impact he's had as captain. I think after KL Rahul slipped out with an injury, Krunal Pandya has been fantastic, and that comeback from Lucknow Super Giants was fantastic. I mean, in case आपने match नहीं देखा हो, Mumbai Indians looked like winning that game. It was their game to win. क्योंकि for the first 14-15 overs, LSG was struggling to put up a decent score, fighting gutsy innings from Krunal Pandya. Very selfless, retired hurt. A lot of people, including R. Ashwin, thought it was a tactical move on 49. Was he retired out or was he retired hurt? But he was limping. He came out to bowl that first over. After that, he limped off again, came back on the field. Very brave from him. And he bowled a very good spell. But kudos to Moshin Khan. That last over, right? I mean, you're bowling to Cameron Green and Tim David, two of the most dangerous hitters in the game. Yeah. Again, I don't agree with the Cameron Green batting position. Should he have batted that low on a pitch like that? Yeah. But again, Marcus Stoinis, 41. He was 41 of 31 balls, Cyrus, Anjali, when Krunal Pandya retired hurt. And he ended up with 89 not out from 47 balls. And that over from Chris Jordan really changed the context of the game, gave them a fighting chance. But what it has done is, more importantly, it has still left 3 playoff spots open. Right. And that is the beauty of the IPL. I think this is the first. Yeah. I think this is the Won't you first. want drama? You would. This is the first time in IPL history that we are so long in the tournament right now, and we still have no clarity of which will be the remaining 3 teams who will be playing the eliminator. I mean the knockout games. So Gujarat has finally qualified. That's good for them. Kudos. But the other teams. I mean, ऐसे मर के तुम बोलो. I mean they. Not overall. I mean, they have qualified. Kudos to them. But बाकी teams के लिए अभी भी everything was open. I mean, I'm not saying बाकी teams. I mean, Delhi and Sunrisers के लिए तो I mean the tournament is over. But I mean they're playing today. But उस match का कितना impact है दूसरी team के लिए impact है. It plays a pivotal role of how Punjab is going to be performing today because Delhi, the only role I think like Sunrisers, Spoilers. Spoilers, is going to be party.
एग्जैक्टली और दिल्ली का आई डोंट थिंक पंजाब को इतना इंटिमिडेटेड होना चाहिए दिल्ली की टीम से, बट वही है पंजाब के परफॉर्मेंसेस बड़े कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं टूर्नामेंट में, दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। अगर टॉप ऑर्डर पे शिखर धवन नहीं चले देन हु विल बैट। सो या अभी अनसर्टेनिटीज हैं, बट आई डोंट नो वेदर दिल्ली कैन रियली पुल ऑफ अ सरप्राइज इन दिस वन। थोड़ा इतना ऑप्टिमिस्टिक हूं नहीं मैं। ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, कोई बात नहीं। दिल्ली बॉय, दिल्ली बॉर्न, बट आई लाइक कितनी जल्दी उन्होंने इस बात को करेक्ट किया है कि कहीं अंजलि यहाँ पे कोई वो ताना ना मार दे कि हाँ दिल्ली में रहते हो, दिल्ली का पानी पीते हो और उसके बाद दिल्ली के लिए वादा खिलाफी करते हो। टेक्निकली इट्स गाजियाबाद, बट या एनसीआर, Yeah, इट्स कॉल्ड नेशनल कैपिटल रीजन पीपल। जिन लोगों को नहीं पता है, ये सब दिल्ली की ही बाशिंदे माने जाते हैं क्योंकि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम दिल्ली वाले हैं। हाँ, रहने दो। खैर, मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले राजश्री की टीम से। उसकी वजह है क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे जो टीम के ग्राफिक्स हैं वो अपलोड नहीं किए हैं। मतलब क्या ही बताएं अभी अंजलि। तो यहाँ पे भी दिखा सकती हूँ अगर चाहो तो। पता है पहली बार अंजलि मुझे लग रहा था कि मैं स्टेडियम में आज हूँ, आईपीएल मैच धर्मशाला मैच हो रहा है। ओह यस, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सच अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक 2013 में लास्ट मैच हुआ था वहां पर, एंड उसके बाद अब जाके मैच हो रहा है। और धर्मशाला में आई डोंट नो हाउ मेनी इफ यू बीन टू धर्मशाला, इट्स सच अ breathtakingly beautiful place, but I haven't been there to watch any of the cricket matches there क्योंकि यहाँ पे होना पड़ता है। I've seen the ground, I've seen the ground, सुना है उसके बारे में, मैं कभी गई नहीं। Oh, Dharamshala, beautiful. I mean, the cricket ground in itself, it has to be the most beautiful cricket ground in the world. It's stunning, absolutely stunning. But कम से कम गर्मी की प्रॉब्लम तो नहीं। शायद थोड़ी सी बारिश भी हो क्योंकि थोड़ा सा फोरकास्ट था बिटवीन 6 and 8, शायद थोड़ी सी बारिश हो। लेकिन परसों भी एक मैच है धर्मशाला में, परसों का फोरकास्ट तो मोस्टली सनी बता रहे थे। बट एनीवे, मूविंग ऑन टू द टीम सेलेक्ट कॉम्बिनेशन, लाइक आई सेड, I'm sticking with a 6-5 for the remainder of the matches mostly. So I have a 5-6 in favor of 6-5 in favor of DC. So that's why Phil Salt, who's been in reasonably good form, props him on saying everybody's been talking about him. So you want those two openers. David Warner, again, it's been a scattered kind of tournament for him. He scored half centuries in the early half of the tournament, but strike rate was an issue in the last match or thereabout. He addressed that as well. Mitchell Marsh, he's my vice captain, and Sam Curran is the captain primarily because it's in Dharamshala. शायद थोड़ी गर्मी हो, but again धर्मशाला में शायद रात को अगर थोड़ी सी नमी होती ना हवा में, अगर बॉल थोड़ी सी मूव करती है, so I would rather go with two medium pace bowling all rounders. And Liam Livingstone again, because he's used to playing in these conditions, he's thrived in those conditions. And I have Ishant Sharma and Mukesh Kumar again, Khalil Ahmed. So it's more pace heavy. With Arshdeep Singh as well as Nathan Ellis. So right now I'm banking on pace, but again, like I keep saying, I'll wait for the toss and the conditions to figure out what changes to make. As for Already done with your list? Yes, ma'am. That was quick. That was quick, right? कुछ सीखो। और बाकी बात करते पंजाब किंग्स की। I have most of my subs from the Punjab Kings: Shikhar Dhawan, Rishi Dhawan, and Jitesh Sharma. Again, Jitesh has been very, very lively as a wicketkeeper batsman, very impactful. Yeah. Shikhar Dhawan, again, like Cyrus said at the start, his form will be important if Punjab have to make a hefty total or chase a mighty total. And Rishi Dhawan, again, एक आध बार impact role में आए हुए हैं, and is a decent all-rounder, bowling all-rounder हैं. He's played for India. But unfortunately, he's not made the most of his talent. And when I saw him at the start, I thought he was a genuinely good, talented all-rounder. And the only one from Delhi Capitals for me is Akshar Patel. I know conditions, right? But again, he's too good a cricketer to leave out. And I think somewhere down the line, he might have that impact that you'd expect of somebody of the Akshar Patel's caliber. Okay. चलिए, ये लिस्ट में एक बार और क्योंकि अभी सब्स आपके ऑन एयर हैं, मैं एक बार दिखा दे रही हूँ कि क्या बोला है आपके लिए राजश्री ने। एंड नाउ आई एम हैंडिंग ओवर टू साइरस। एंड साइरस, व्हाइल यू स्टार्ट, आई जस्ट सो जैसे आश्री ने बोला था, एज वी मूव टुवर्ड द बिजनेस एंड, मैं यूजुअली करता क्या था, 7 खिलाड़ी एक टीम के और 4 खिलाड़ी दूसरी टीम का रखता था। बट नाउ एज वी मूविंग टुवर्ड्स द मोस्ट सीरियस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, मैं सोच रहा हूँ कि वही 5-6 वाला रेशियो अपनी टीम में रखूं। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने अब तक जो भी टीम्स बना के डाली हैं, ठीक है, आई हैवंट विन वन हेफ्टी, बट मैं हारा हूंगा 1-2, बट आई विन द मनी दैट आई पुट इनटू द पैसा वापस आ जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि दिस एंटायर मॉडल 20-30 रुपए 60 रुपए का फायदा ही हो जाता है। सो आई मीन लाइक crores of people playing। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। नहीं मैं वही बता रहा हूँ। बस
इतना कह रही हूँ कि उस 20-30 रुपए की तो हमें चाय तक नहीं नसीब होती। I mean, वही है, ना नुकसान हुआ ना मुनाफा हुआ, बट एक संतुष्टि होती है कि हम चलो हमने टीम बनाई, आई वॉज राइट एंड इन अ वे कि आई डिडंट लूज मनी, तो वो भी होता है कि हम चलो ठीक है अगले मैच में खेलेंगे, तो वो एक मोटिवेशन मिलता रहता है, चलो ठीक है पैसे हार नहीं रहे, वी आर गेटिंग द मोटिवेशन टू कीप प्लेइंग। सो अब तक वही रहा है ऑफ द टीम दैट आई पुट, अक्षर पटेल एंड सैम करन, टू ऑलराउंडर्स आई पुट एज माय captain and vice captain, purely because again all rounders fetch more points, which is why मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा ऑलराउंडर्स अपनी टीम में रखूं। शिखर धवन, जिस तरह राशि ने कहा, उनका फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड होपफुली he can make an impact for Punjab today, because see, if Punjab lose today, the lesser the chances are there for them qualifying for the top 4, which is very difficult. Delhi ke to chalo theek hai, tournament khatam hai, it is more for Punjab to lose from here, and they wouldn't want to do that. David Warner, in form batsman, yeah, definitely would want him on a list. Same for Mitchell Marsh, he's coming back. Bowling में थोड़ा impressive लग रहे हैं अब, और बल्ले के साथ थोड़ा contribute करते हुए नजर आ रहे हैं. He hasn't been that impressive, but yeah, you would want to keep a Mitchell Marsh on your team. Same with Riley Rousseau on the middle order. Sikandar Raza, all-round option in the middle order. कहीं ना कहीं बैटिंग से अपने इम्पैक्ट कर सकते हैं. He has immense T20 experience, so maybe आज सिकंदर रजा can be impactful. Jitesh Sharma, like Rajshri said, very good batsman, never keeper batsman for Punjab. Might be कि ऐसे इतने डोमेस्टिक प्लेयर्स आजकल टूर्नामेंट में काफी इंप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में भी. सो मे बी इन दिस मैच वी गेट टू सी जितेश's बैटिंग prowess. ईशांत शर्मा, he has been good. शुरुआत जब हुआ था टूर्नामेंट, we didn't even know ईशांत शर्मा को मौका मिलेगा, but slowly down, like अब दिल्ली को हारता हुआ कॉज है, I don't know why it is, but उनको टूर्नामेंट में मौका दिया जा रहा है, and he has been impressive. विकेट्स ले रहे हैं consistently, he has been economical. पता नहीं उनको शुरुआत में क्यों मौके नहीं मिले, but yeah, I would love to keep him in my team. Same with Arshdeep Singh. 2 किल्लियां तोड़ी जरूर हैं, लेकिन उनका फॉर्म डिप करता हुआ नजर आया मुझे. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था ही वाज बैंग ऑन इंप्रेसिव, विकेट्स ले रहे थे, इकोनॉमी रेट भी अपनी अच्छे रखते थे, लेकिन अब जब ऐसा टाइम आ गया कि पंजाब को मैचेस जीतने हैं, ही हैज बीन वेरी एक्सपेंसिव फॉर सरप्राइजिंग रीजंस. क्या बैट्समैन ने पढ़ लिया, व्हाट हैज हैपेंड? आई वुड लाइक टू नो योर इनपुट. अर्शदीप सिंह, बिकॉज ही हैज बीन वेरी एक्सपेंसिव दीस डेज. स्टार्टिंग में उनकी इकोनॉमी रेट थी 7-8 के आसपास, अब देखिए उनके मैचेस ना विकेट्स ले रहे हैं और 11-12 का इकोनॉमी रेट आ रहा है उनका. आई थिंक उनके ऊपर प्रेशर जो सबसे ज्यादा होता है डेथ ओवर में बॉलिंग, वेदर ही इज डिफेंडिंग, वेदर दे बॉलिंग फर्स्ट, इट्स दैट प्रेशर, एंड ही इज वेरी यंग. आई थिंक the other factor is that some of these pitches haven't also been very helpful. It's been excruciatingly hot, and when you spend that long, the first 3-4 seasons for any emerging player is the most challenging, because it was the same for Rishabh Pant, even as a batter. Yeah. When you come on to the scene, when you burst on, the way he would bat, the way he would attack, he would take people by surprise, right? He came in like a storm, and then they sort of realized how to stop him and how to stifle him. I think the same thing has happened with Arshdeep Singh, because he's also played for India after a couple of good domestic seasons. Don't just focus on the IPL, because he's also had some good run in the domestic circuit as well. I think he's been found out a little bit, and he's erring a little too much bowling those Yorker lines. When you miss, because for in the death, when you miss those Yorker lines, when you miss those block hole lines, it's easy pickings, especially in these conditions. And again, on the square side, the boundaries have been relatively shorter, right? And they anyway pulled back in for the T20 format. Right. So I think that's where it's cost him. But I think the pressure on him is with those death overs. अभी 2 लगातार मैचेस ऐसे थे मेरे ख्याल से जिन्होंने 19 के 20 ओवर बॉलिंग की. इंडिया के लिए भी सेम हुआ था T20 वर्ल्ड कप में. Right. वो बेचारे बहुत यंग हैं, and he's very very young. He's still learning. There's too much pressure, and as a pacer also, you also developing your muscle skills, your core muscle skill. Right. And you do that when you're 25, 26, you tend to do that a little bit more. Right? So abhi bhi unko jo strength develop kar rahe hain, and he wants to add that extra yard or 2. Right. That will happen with more training and with more experience. I hope it's not fatigue, because हाँ एक राशि ने एक बात की, these players get exposed. Problem जो होती है, आप इंटरनेशनल सर्किट में मैचेस खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप डोमेस्टिक में इतनी बॉलिंग करते हैं, you're bowling to international players, you're bowling to so many batsmen. तुम्हारा जो एक स्पेशलिटी है, that X factor gets exposed, and the batsmen get used to it. तो आप टूर्नामेंट की शुरुआत में चाहे आप जितनी अच्छी बॉलिंग करते हो, डाउन द लाइन आपके जो वीकनेसेस हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स को अफेक्ट करता है. मे बी इन दिस केस अगर ऐसा ही हुआ है, बट या आई मीन ही नीड्स टू रियली डेवलप.
अभी टाइम है, यंगस्टर है, उनके पास मौका है वो डेवलप करने का टू मेक हिमसेल्फ बेटर. बट या दिस इज व्हाट द चैलेंजेस ऑफ क्रिकेट आर. यू प्लेइंग डोमेस्टिक और यू प्लेइंग इंटरनेशनल. तो या कुलदीप यादव लास्ट spinner again hasn't been that impressive, but he's that kind of a player. थोड़ी इकोनॉमी रेट अपनी रख सकते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है मेरी टीम में. प्रभसिमरन सिंह सेंचुरियन ऑफ द लास्ट गेम एंड नेथन लेलेसी एक कॉम्बिनेशन को इन आउट किया था पंजाब ने लास्ट अपने मुकाबले में. तो I would go with the same combination. And Manish Pandey and Khalil Ahmed. Manish Pandey again having so much of experience has been very disappointing. अगर मनीष पांडे का फॉर्म चल जाता दिल्ली के लिए तो कहीं ना कहीं वो उम्मीदें थी डेविड वार्नर को सपोर्ट मिल जाता, लेकिन वो भी निराश करते हुए नजर आए हैं. दैट हैज बिन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि उनका डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं दिल्ली के वो नहीं चले अपार्ट फ्रॉम अक्षर पटेल. सो या आई डू नॉट थिंक कि पंजाब को इतनी बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. दिल्ली के लिए आई थिंक इट्स वही कल वाला सिनारियो है अंजलि की, आओ गेम खेलो, जीत सकते हैं, पार्टी खराब करो. Actually they have no other objective here rather than to just spoil the party for Punjab. In a way, if DC win, Yeah. it leaves the tournament further wide open. I mean, look at it this way: Punjab are playing 2 more matches from here on. DC के बाद एक और है. RCB also have 2 more matches left. Yeah. And they are playing SRH next, which is tomorrow. So they lose these 2 games, and the weekend gets more exciting. And the last league game is RCB versus GT, Right. which then एक becomes बात a must बताइए win. मुझे, ये वीकेंड गेट्स मोर एक्साइटिंग बट इट मींस मोर वर्क आल्सो फॉर यू नो. ये चलता है, सारे मैच देखो, बैठो, ये सारा एनालिसिस करो. I mean, that's part of the trade, right? I mean, you do that. You enjoy what you do. टूर्नामेंट के Yeah. पर्सपेक्टिव से देखिए ना अंजलि, कुछ कभी क्या होता है टॉप 4 डिसाइड हो गए लेकिन बाकी ये टीम्स खेलने के लिए बची हैं. दीज आर डेड रबर्स. एग्जैक्टली वो ऐसे ही खेल रहे हैं, कोई रोमांस नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता. आपको याद है एक टूर्नामेंट था पिछले साल या 2 साल पहले जहां पे लास्ट के 2 लीग मैचेस एक ही टाइम पे शुरू हुए थे, सो दैट नाइदर टीम हैड द एडवांटेज ऑफ फिगरिंग आउट व्हाट नेट रन रेट टू प्ले ऑन और द डिसएडवांटेज. सो वैसे भी हो सकता है, कुछ सिनेरियोज ऐसे भी. हां, आई डोंट रिमेंबर द पेनल्टीमेट गेम ऑफ द टूर्नामेंट, द पेनल्टीमेट लीग गेम, बट द फाइनल गेम आई रिमेंबर because it's RCB versus GT and RCB are in such a quagmire right now. Yeah. They need to win tomorrow Right. to be a little safer. Even if they win, they're obviously not assured of a playoff spot Correct. until the very last league game. तो आप एक अनुमान लगाइए, आपके जो क्वालिफाइड जो नॉकआउट्स हैं 4 टीम्स के, वो तो बीच में रहेंगे, लेकिन लीड टीम्स के लिए भी एक पोटेंशियल नॉकआउट सिस्टम एक सिनेरियो बन जाता है कि उनको जीतना ही है. तो वो टूर्नामेंट पर्सपेक्टिव से इट जस्ट गेट्स मोर एक्साइटिंग. तो जितना करीबी मामला है, जितने पॉइंट्स अभी क्लोज हैं टीम्स के, इवन नेट रन रेट भी, आई थिंक फैंस एंड जो व्यूअर्स हैं दे वोंट बी कंप्लेनिंग. फैंस सब अपनी वैसे ही यू नो वो इस व्हाटएवर दिस पोजीशन इज कॉल्ड, वो लॉक फिंगर्स fingers क्रॉस करके बैठे रहते हैं. याद फिंगर्स क्रॉस्ड है ना, वो बहुत पुरानी चीज है. मुझे नई चीजें आती हैं. आई एम श्योर देयर इज समथिंग एल्स दैट द यंगर जनरेशन इज डूइंग. करते क्या, आई डोंट नो व्हाट इज इट. You tell us. You tell. I don't know. मुझे क्या पता है यार. I'll tell you a truth today in this bulletin. ये जो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, both of them are younger than I am. Mirror के सामने जाके she does this. She picks up these poses to show the world. I mean, Yeah, यहाँ बिल्कुल पे phone practice लेके करती Google हूँ. लेके ये करना. बिल्कुल दाढ़ी सफेद हो रही है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पब्लिकली बता दें कि हाँ ठीक है. मतलब ये ऑब्वियस करना जरूरी नहीं है. ऑफ कोर्स वी आर. Yes. And anyway, मैंने आपको दोनों जो टीम्स हैं वो एक बार फिर से दिखा दी हैं और we'll take your leave. लेकिन जाते जाते मैं डिस्क्लेमर नहीं बोला इतने दिनों से, मैं ध्यान दे रहा हूँ. डिस्क्लेमर लिख के दे देती हूँ मैं, नीचे अच्छा. चलता रहता है पूरे टाइम. ठीक है, लेकिन जाते जाते मैं एक मीन कमेंट मार जाती हूँ, किस पे? पर वो फिर मार करके मैं ना एकदम से एंड ब्रॉडकास्ट कर दूंगी सो दैट दीस गाइस डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्लाई. ठीक है, चलिए मैं कहती हूँ, ये फोन है या मतलब क्या है? यू मेड अ टैंक आउट ऑफ इट. ये अंजलि इसको कह रही है.